हम लोग फ्लोएम कर रहे थे ना, वी वर डूइंग फ्लोएम। तो फ्लोएम में लास्ट पॉइंट क्या मैंने बताया था कि दे आर रिफर्ड एज मदर सेल एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम, दे आर रिफर्ड एज सिस्टर सेल एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेम मदर सेल, यही बताया था लास्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, चलिए राइट ऑन। राइट ऑन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सीव ट्यूब इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सीव ट्यूब इज long tube like structure, sieve tube is long tube like structure arranged arranged longitudinally, arranged longitudinally मतलब लेंथ वाइज, having having perforation, having perforation, perforation का मतलब ओपनिंग, ठीक है, having perforation at, having perforation at end wall known as sieve area or sieve plate or sieve pore, having perforation at end wall known as sieve area, sieve plate और sieve pore, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए मेच्योर sieve tube, a mature sieve tube is enucleated, is enucleated, enucleated का मतलब क्या हुआ, विदाउट न्यूक्लियस। A mature sieve tube is enucleated but living, but living मतलब क्या हुआ कि यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा सीव ट्यूब में, लेकिन लिविंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, ए लार्ज सेंट्रल vacuole is present, as a result cytoplasm, as a result cytoplasm becomes peripheral in position, as a result cytoplasm becomes peripheral इन पोजीशन। मतलब क्या हुआ, सेंटर में वैक्यूल है जिसके कारण क्या होगा, साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म बिकम्स पेरिफेरल इन पोजीशन। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लोजली एसोसिएटेड विथ, क्लोजली associated with sieve tube is, closely associated with sieve tube is companion cell, closely associated with sieve tube is
companion cell. These are specialized. These are specialized parenchymatous cell. These are specialized parenchymatous. These are specialized parenchymatous cells. ठीक है। अब यहां पे दो तीन चीज इंपॉर्टेंट समझने का, उसको पहले समझ लो फिर लिखना। देखो, ये कंपेनियन सेल है, ये सीव ट्यूब है, दोनों के बीच में लार्ज नंबर ऑफ पिट कनेक्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, पिट कनेक्शन मतलब ओपनिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिटवीन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, बिटवीन sieve tube and companion cell, large number of pit connections are present. Large number of between sieve tube and companion cell, large number of pit connections are present. ठीक है। अब देखो, कंपेनियन सेल का काम क्या है। तो दो काम है, एक तो आसानी से समझ में आ जाएगा, एक जो है वो ट्रांसपोर्टिंग प्लान में ज्यादा समझ में आएगा। यहां भी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। पहला काम इसका ये है कि हमने आपको बताया कि सीव ट्यूब के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो लेकिन सेल के फंक्शन के लिए न्यूक्लियस तो रिक्वायर्ड है, कि वो फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा फिर। तो फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल controls the functioning of sieve tube, controls the functioning of sieve tube। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है, जो आपको थोड़ा पता नहीं समझ, देख होता क्या, देखो, फोटोसिंथेसिस जब होगा तो शुगर बनेगा। ठीक है, लीफ में शुगर बना, क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, फिर क्लोरोप्लास्ट से होते हुए ये कंपेनियन सेल में पहुंचेगा, और कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब में आएगा, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का। तो जब यहाँ पे शुगर आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे शुगर आया, तो होता क्या है, इसके थ्रू आया, इस कनेक्शन के थ्रू इधर आएगा, तो बगल वाले जाइलम से यहाँ पे पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया। ऑस्मोसिस का कंसेप्ट याद है ना। तो यहाँ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हुआ, शुगर आ गया, तो इधर से पानी आया, तो इस एरिया में हाई प्रेशर बन गया, उसके रिस्पेक्ट में इस एरिया में तो लो प्रेशर है। दैट मीन्स देयर इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। इसको डिटेल में हम लोग फिर से सुनो। देखो, मैंने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस हुआ, शुगर बना, शुगर जो है क्लोरोप्लास्ट से यहां पहुंचेगा कंपेनियन सेल में। कैसे होता है ये हमने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ना है। ठीक है। अब क्या है कि यहां से फिर इसमें आएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो बगल वाले जाइलम वेसल से क्या होगा, पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब पानी आएगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट क्यों हुआ? क्योंकि कंपेनियन सेल जो यहाँ पे शुगर ट्रांसफर किया। बाकी इसको डिटेल में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में। तो नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, कंपेनियन सेल हेल्प्स इन, नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, companion cell helps in development of pressure gradient in sieve tube, development of pressure gradient in sieve tube।
ठीक है। ज्यादा अंदर जाइलम होगा, अभी वो भी आएगा, चिंता मत करो, वो डायग्राम अभी आएगा, आगे आएगा। जाइलम होता है सबसे अंदर, आपको प्राइमरी जाइलम मिलेगा, अभी सब आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का दो मेन काम है, इसका न्यूक्लियस के फंक्शन कंट्रोल करता है, और दूसरा ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है ना। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ elongated, tapering and closely packed cylindrical cells। ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा consist of phloem parenchyma consist of elongated, consist of elongated, tapering, cylindrical cells which are closely packed, which are closely packed they have cellulosic cell wall, they have cellulosic cell wall, densely cytoplasmic, densely cytoplasmic with nucleus, densely cytoplasmic with nucleus, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लार्ज नंबर ऑफ, large number of plasmodesmatal connections, large number of plasmodesmatal connections, large number of plasmodesmatal connections are present। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको पता है कि व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन? टैपरिंग का मतलब ऐसा, एंड आपको तो सही बताया, ऐसा ब्लंट टाइप से दो प्लांट सेल के बीच में जो ट्यूबुलर कनेक्शन होता है ना, उसको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंटेड नहीं, टैपरिंग मींस ब्लंट। पॉइंटेड होगा तो पॉइंटेड होगा, टैपरिंग मींस ब्लंट, इट इज नॉट पॉइंटेड, इट इज ब्लंट, जो कि आपको जाइलम ट्रकीड्स में बताया था मैंने। पॉइंटेड होता है स्क्लेरेंकाइमा में, फाइबर में। ठीक है, तो यहाँ पे टैपरिंग है, पॉइंटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा is involved in, phloem parenchyma is involved in storage of food material, storage of food material and and other substances, storage of food material and other substances like resins,
mucilage, latex, etc. Resin, mucilage, latex, etc. ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट ब्लर हो रहा है, मैंने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा इज स्टोर्ड इन storage of food material, storage of food material and other substances like resin, mucilage, latex, etc. Resin, mucilage, latex, etc. Now, नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा, शायद इस बार भी आया था नीट में। ठीक है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इट इज यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा is usually absent in phloem parenchyma is usually absent in monocots. Usually absent in monocots. ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। ये डायग्राम बाद में बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। ठीक, इट इज द ओनली डेड स्ट्रक्चर, it is the only dead structure associated with, it is the only dead structure associated with phloem. It is the only dead structure associated with phloem. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is sclerenchymatous okay, it is sclerenchymatous, also known as vast fiber. It is sclerenchymatous, also known as vast fiber. तो फ्लोएम फाइबर को हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बास्ट फ्लोएम के लिए यूज करते हैं टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ, it is of economic importance in case of jute, hemp and linen. जूट जिससे बोरा बनता है, जिसमें सामान वामान गेहूं वगैरह पैक करते हैं। हेम्प भांग का फाइबर आता है,
भांग का प्लांट, और लिनन क्लोथिंग होता ना, वो सारे के सारे बास्ट फाइबर है। इट इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ जूट, हेम्प एंड लिनन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फ्लोएम फाइबर इज जनरली एब्सेंट इन फ्लोएम फाइबर is generally absent in primary phloem fiber is generally absent in primary phloem। next point लिखिए। phloem fiber is elongated with pointed end। phloem fiber is absent in primary phloem। phloem fiber is absent in primary phloem। next point लिखिए। phloem fiber is elongated with pointed end, elongated with pointed end। they are unbranched। क्या ऑलवेज जनरली, जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है, प्राइम फ्लेम में। दे आर अनब्रांच्ड विथ थिक सेल वॉल, विथ थिक सेल वॉल, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर एक दो पॉइंट और है, फिर बता देता हूं। बनाइए जल्दी से। बन गया। हाँ, अब देखो, ये तो मैंने एक सीप ट्यूब बताया। अब मान लीजिए कि इधर भी सीप ट्यूब होगा, इधर भी होगा, तभी तो एक साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इधर भी इसका सीप पोर होगा, इधर भी इसका सीप पोर होगा, तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूटी कैसे होगा, कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन होगा। तो होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ऐसे कर एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, ऐसे करके साइटोप्लाज्म जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। दिस इज रिफर्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये क्या करता है, एडजेसेंट सीप ट्यूब के बीच में कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक्सटेंड इसलिए हुआ क्योंकि इनको कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना, तभी तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। डाउन continuity between adjacent sieve tube। next point लिखिए। continuity between adjacent sieve tube is maintained with the help of continuity between adjacent sieve tube is maintained with the help of cytoplasmic strands, is maintained with the help of cytoplasmic strands, STRAND, cytoplasmic strands, ठीक है ना। अब देखो, हमें पता है कि इंसेक्ट जो है प्लांट के सैप पे फीड करते हैं, माने प्लांट में जो फूड फ्लो कर रहा है उस पे फीड करते हैं। तो इंसेक्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टाइलिस कहते हैं, एफिड्स में स्टाइलिस होता है। वो ऐसे करके पियर्स कर देगा, छेद कर देगा, फ्लोएम से वो सैप को सक करेगा और फिर उड़ जाएगा वो। लेकिन उसने तो छेद कर दिया ना, तो फ्लोएम में तो प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उससे तो सैप बाहर निकलने लगेगा। जैसे आप कभी देखते हो किसी पेड़ में इंजरी कर दो तो उससे सैप बाहर निकलने लगता है। तो प्लांट को तो पता है ना कि उसका सैप लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना है। तो वहां पे क्या करता है, वो एक प्लग बनाता है, उसको कहते हैं कैलोज प्लग, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, ऐसा माना जाता है कि फ्लोएम में एक प्रोटीन होता है,
सब में व्हाइट नहीं होता है, कलरलेस भी होता है, डिफरेंट येलो कलर का भी होता है, छोड़ो उसको, कलर छोड़ो। तो होता क्या है कि इन फ्लोएम वी हैव पी प्रोटीन. P stands for phloem, which helps in formation of callose plaque when phloem gets damaged. ठीक है, जब भी फ्लोएम डैमेज होगा तो ये पी प्रोटीन जो है कैलोस प्लग बनाने में हेल्प करेगा. राइट डाउन. इन फ्लोएम, in phloem, P protein is present in phloem. P protein is present, which helps in formation of, which helps in formation of callose plug, which helps in formation of callose plug when phloem gets damaged. When phloem gets damaged. ठीक है, देखिए ना, जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जाइलम जो होता है वो दो तरीके का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. तो वैसे प्राइमरी फ्लोएम भी दो तरीके का होता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. लेकिन जाइलम में मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था कि एग्जैक्ट होता है और एंडार्क होता है. फ्लोएम में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम जो है ना वो क्रश हो जाता है, जब प्लांट ग्रो करता है तो वो क्रश हो जाता है, कुचल जाता है वो, तो वो रहता ही नहीं है, तो अरेंजमेंट कहां से शो करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. प्राइमरी फ्लोएम, primary phloem is divided into two different types, that is early phloem or protophlloem, early phloem or protophlloem, and late phloem or metaphlloem. ठीक है, लेट फ्लोएम और मेटा फ्लोएम. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्लांट टिश्यू सिस्टम. तो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू खत्म हो गया. नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू सिस्टम. ठीक है, तो प्लांट की केस में देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम on the basis of location, and it is the location which will determine the structure and function of tissue system. Right on the basis of location, on the basis of location, there are three different type of tissue system. On the basis of location, there are three different types of tissue system, and it is just location, and it is the location which determines it is the location which determines structure and function of tissue system. It is the location which determines structure and function of
टिश्यू सिस्टम। तो कौन कौन सा है? एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। लिख लीजिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? ओके, now write down heading epidermal tissue system. Write down epidermal tissue system. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में दो चीज आता है, रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। जो रूट पे हेयर है उसको रूट हेयर कहते हैं, जो स्टेम पे हेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोम्स। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। Epidermal tissue system consists of three parts, that is epidermis, stomata and epidermal appendages. Epidermal appendages, that is root hair and trichomes. रूट हेयर एंड ट्राइकोम्स। अब देखो, एपिडर्मिस जो होता है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, जनरली जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड इलोंगेटेड सेल्स which are parenchymatous having cellulosic cell wall. जब आप सेल को देखोगे तो what you will observe, there is a large central vacuole. As a result, cytoplasm becomes peripheral in position. तो सेल्स में लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होगा, जिसके कारण साइटोप्लाज्म पेरिफेरल। जनरली ऐसा देखा गया है कि एपिडर्मिस के ऊपर देयर इज ए वैक्सी कवरिंग ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल का कवरिंग होता है, उसका काम क्या है? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, कि प्लांट बॉडी से उस पार्ट से वाटर का लॉस मिनिमाइज हो। ठीक है, बट क्यूटिकल जो है वो रूट्स के केस में एब्सेंट होता है। रूट्स में आपको एपिडर्मिस पे, रूट के एपिडर्मिस पे आपको क्यूटिकल नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा डाउन। एपिडर्मिस, इट इज आउटर मोस्ट लेयर of the primary plant body. It is outermost layer of primary plant body which consists of closely packed, which consists of closely packed elongated cells which consist of closely packed elongated cells which forms continuous layer, which forms continuous layer. मैंने कहा it consists of closely packed elongated cell, it consists of closely packed elongated cell which forms continuous layer.
which forms continuous layer ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए epidermis is usually single layered नेक्स्ट पॉइंट लिखिए epidermis is usually single layered in bracket write down it is multi-layered in case of it is multi-layered in case of ficus nerium and peperomia. It is multi-layered in case of ficus nerium and peperomia. 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 ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला पॉइंट लिखिए cell wall of epidermal cell is made up of cellulose. It is parenchymatous. Cell wall of epidermal cell is made up of cellulose. It is parenchymatous. Next point लिखिए in cells of epidermis is parenchymatous with cellulosic cell wall. Cells of epidermis is parenchymatous with cellulosic cell wall. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए in cell large central vacuole is present. In cell large central vacuole is present. Large central vacuole is present. As a result, nucleus becomes peripheral in position. As a result, nucleus becomes peripheral in position. ठीक है sorry cytoplasm not nucleus. As a result, cytoplasm becomes peripheral in position. Next point लिखिए on epidermis there is deposition of waxy cuticle. On epidermis there is deposition of waxy cuticle. अरे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का मतलब ये हुआ जैसे मान लो एक सेल है इसके अंदर ये वैक्यूल आ गया तो ये पेरिफेरी साइटोप्लाज्म तो इधर आ गया ना पूरा तो ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म हो गया डिस्प्लेस हो गया सेंट्रल पोजीशन से epidermis is covered with waxy covering of cuticle which prevents the loss of water. Which prevents loss of water. Next point लिखिए cuticle is absent. Cuticle
is absent in case of root epidermis. Cuticle is absent in case of root epidermis. ठीक है, next stomata. Next heading is stomata. तो स्टोमेटा होता क्या है? इट इज जनरली एन ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस. कुछ कुछ केस में यंग स्टेम में भी होता है, बट जनरली इट इज ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, वेयर इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. CO2 अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, वाटर वेपर इवेपोरेट करेगा, तो इट विल हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज. राइट ऑन. इट इज एन ओपनिंग प्रेजेंट on epidermis of leaf, epidermis of leaf, where it helps in gaseous exchange, where it helps in gaseous exchange. अब थोड़ा इसका ना स्ट्रक्चर समझ लो. ठीक है, देखो, जब आप देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि देयर इज एन ओपनिंग रिफर्ड एज स्टोमेटल पोर. ठीक है, एंड दिस स्टोमेटल पोर is surrounded by pair of kidney or bean shaped guard cell. This is your guard cell, which is kidney or bean shaped. ठीक है, यहां पे एक एक्सेप्शन है. ग्रासेस में क्या होता है? इन केस ऑफ ग्रासेस, ये जो गार्ड सेल होता है, ठीक है, गार्ड सेल इज डम्बल शेप्ड, ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है ना. अब गार्ड सेल का काम क्या है? ये स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है. ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में. लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटीज है इसमें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चीज है जो कि उसमें रोल प्ले करता है. क्या क्या है? जब आप देखोगे, जो वॉल ऑफ गार्ड सेल है, ठीक है, विच इज टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, इज थिकर देन, यहां पे थिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर. पहला ये पिक्यूलियरिटी है. दूसरा, इन गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. इसका भी रोल है, ठीक है, माना जाता है. सो दिस इज योर chloroplast. Then what you will observe, in guard cell, radially elongated cellulosic microfibrils are present. ठीक है, ऐसे ऐसे करके cellulosic microfibrils present होंगे गार्ड सेल में. This is your cellulosic microfibrils, मैं लिखवा दूंगा. ठीक है, cellulosic microfibrils. तो मैंने तीन स्ट्रक्चरल पिक्यूलियरिटी यहां पे बताया. पहला कि गार्ड सेल का वॉल का जो थिकनिंग है वो डिफरेंशियल है, मतलब जो पोर की तरफ है वो थिक है, जो अवे फ्रॉम द पोर है वो थिन है. दूसरा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. तीसरा कि देयर इज रेडियल इलोंगेटेड सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल. ये तीनों का रोल है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में. दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, दीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, ये जो गार्ड सेल है
they are surrounded by specialized epidermal cells, and these cells are referred as subsidiary cell. ऐसे पुल करने में हेल्प करता है जब स्टोमेटा को ओपनिंग करना है। तो अभी आगे आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। राइट डाउन, लिख लीजिए, फिर डायग्राम बना लीजिएगा। राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, stomata consists of an opening. Stomata consists of an opening known as stomatal pore, known as stomatal pore, which is surrounded by pair of kidney or vein shaped guard cell, which is surrounded by pair of kidney or bean shaped guard cell. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, wall of guard cell towards the stomatal pore is thicker than wall away from the stomatal pore. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन गार्ड सेल radially elongated cellulosic microfibrils are present. Cellulosic microfibrils are present. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, guard cells are surrounded by specialized epidermal cell known as subsidiary cells. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in case of grasses guard cell is dumbbell shaped, DUMBBLL, dumbbell shaped. जल्दी से डायग्राम बना लीजिए.
जल्दी डायग्राम बना लीजिए। बन गया? थर्ड लिखिए एपिडर्मल अपेंडेजेस। थर्ड लिखिए एपिडर्मल अपेंडेजेस। फर्स्ट लिखिए रूट हेयर, epidermal appendages. First write down root hair. Write down these are unicellular epidermal elongations. These are unicellular epidermal elongations which increases surface area of absorption. It increases surface area of absorption and helps in absorbing water and mineral, helps in absorbing water and mineral from soil. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, TRICHOMES, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है? ट्राइकोम्स जो होता है, दीज आर हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। रूट हेयर हो गया, हेयर रूट पे, ठीक है, ये है स्टेम पे। दीज आर हेयर प्रेजेंट ऑन स्टेम। सेकेंड लिखिए, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर मल्टी सेलुलर। अभी एक डिफरेंस देखो यहाँ पे, वहां पे अनब्रांच रहेगा रूट हेयर, ये ब्रांच अनब्रांच है। यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मल्टी सेलुलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉफ्ट और स्टिफ। सॉफ्ट और स्टिफ, STIFF। हार्ड भी हो सकता है, जो स्टेम पे हेयर है। रूट हेयर हार्ड नहीं होता, ठीक है। कैन बी सॉफ्ट और स्टिफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कैन बी सिक्रीटरी। कैन बी सिक्रीटरी, मतलब ये सब्सटेंस को सिक्रीट कर सकता है। हाँ, रूट हेयर अनब्रांच्ड होता है यासिका, ठीक है। यूनिसेलुलर तो ब्रांच कैसे होता है, ठीक है। सिक्रीटरी। नेक्स्ट लिखिए, ट्राइकोम हेल्प्स इन, ट्राइकोम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, ट्राइकोम हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, helps in preventing loss of water through transpiration, helps in preventing loss of water through transpiration.
helps in preventing loss of water through transpiration. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. Okay, that we will do in next class.